अनीश भाई, जेपी मॉर्गन टॉय कलेक्शन, हम दोनों टॉय कलेक्शन शेयर कर रहे थे, मैं इसको अपनी दिखा रहा था, ये मेरी। अनीश, प्रोफाइल बता अपना, और कैट पजल बताना तो बता दो। Sure, sir. So, 10th ICSE 94.6, 12th HSC State Board 93, and Bachelor of Engineering 9.73 CGPA, and 4 years of work experience at JP Morgan Chase. CAT 98.28 percentile. Excellent, excellent. If I may ask, was it general? Yes, sir. General category, general Oh, engineering. 98%, 4 years experience. Wow. Yes, sir. You're role model for many people. 4 साल बाद लोगों ने बोला नहीं भाई नौकरी बढ़िया चल रही, क्या करना है तेरे को, ये सब क्यों कर रहा है? No, sir. I think learning has no age, and when I felt it was right for me after gaining sufficient experience, I am now into this field, and I hope it will. Excellent, excellent. Thank you so much, Anish. और कुछ ज्ञान देना है इनको, कैट 24/5 का? लोग टेंशन में है, होगा नहीं होगा, क्या करूं मैं? I think, sir, this journey is a long process. So I would just say that follow Sumit sir like the Bible for cat. जब वो बोलते हैं मोटिवेटेड रहने का, जो टिप्स वो देते हैं, the attempt strategy and everything, just listen to him, just trust him, and everything will fall into place. That is what I followed, and that helped me. ये ट्रस्ट ही नहीं करते, कैसे इनको ट्रस्ट दिलाएं यार? हर साल ट्रस्ट करवाना पड़ता है, फिर जाके लोग बोलते हैं कि समझ ही नहीं आ रही इनको। मैं बोलता हूँ कर बैठा हूँ मैं, सुन लो मेरी बात। या गुप्ता जी, कैट के लिए टिप यही है कि दिस इज द स्टार्टिंग, इसके बाद तो बहुत ऊपर जाना है। तो सर आई वुड सजेस्ट कैट इज ओनली द बिगिनिंग, बी स्कूल इज द एंट्री गेट, उसके बाद सर मैराथन रन करनी है सर लाइफ की। उसके बाद से 1 घंटे का एक ज्ञान, वो जो स्थिति है ना 20 स्कूल अंदर घुसने के पहले, हाँ वो हो जाएगा। वो इट्स लाइक यू आर विद 400 अदर पीपल लिविंग थ्रू द सेम लाइफ, वो हो जाएगा। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर 20 स्कूल वाली लाइफ बताओ। मैं बोला अरे यार कुछ तो रहने दो यार। अंदर वापस आया तो शान, सुपर्ब यार, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन। व्हाई डिड यू मूव टू यूएस? लोगों को ज्ञान दे दे अभी। आर यू इंस्पायर्ड बाय मोदी जी? मतलब you can keep your thoughts to yourself as well if you want to, if you want to talk bad, but go ahead. I mean, yeah, sure. Thank you so much. I mean, I moved back because I was saturated from work. I needed a break. So I decided to like take a year and a half off and just play chess and travel. In that time, I wanted to figure out what comes next, and that's how I ended up giving CAT and entered this entire process. Awesome, awesome. Any tip you want to tell them? तो US से पढ़ के आया, इंडिया में स्टडीज वडीज मैनेज हो गया था? I mean, I too was always good in studies, so I am an academically inclined kid, which is why this is just a step for me to kind of broaden my vision a little bit in terms of what I know. Because I am very like theory-based person, very academic. Good. Let me know like how do you compare US education versus India education later on when you reach there? Of course, we'll do. Awesome. As for CAT के लिए advice, I can say that like CAT is kind of like a mini MBA in the sense that they are testing your instant decision-making skills. So each question you look at, you have to make an instant decision. Should I even solve this? Can I solve this in a given like 2 to 3 minutes? Let's say it's a QA question. Because I'm sure if you have no time, you'll be able to solve every question. If you have 10th तक का ही syllabus आता है अगर देखा जाए तो. So it's not about your capability, it's about your decision-making skills. So then whatever strategy you have to come up with during all your mocks, it is one that has to be optimized for yourself. है ना? बाकी सब strategies बोलते रहेंगे, वो उन्होंने मेहनत कर करके मॉक्स दे दे के खुद के लिए फिगर आउट किया है। कोई जनरल स्ट्रैटेजी नहीं है जो वर्क करती है सबके लिए। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी फिगर आउट करनी है। अब आप दूसरे से पूछो, कुछ आपको टिडबिट्स मिलेंगे जो आपके लिए आप ट्राई करोगे, मॉक दोगे, एनालाइज करोगे एंड इट मेक सेंस। मैंने ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, मुझे फॉर्मुलेज नहीं याद करने थे। मेरी अच्छी भी होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं स्किप, अगर बाद में टाइम बचा, आई कम बैक टू इट एंड ट्राई टू फिगर इट आउट, अगर इफ इट इज इजी इनफ। अदरवाइज ठीक है, आई मीन सो आई न्यू माय स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन ज्योमेट्री बिकॉज मुझे उसकी पढ़ाई में टाइम ही नहीं देना था ना। DIL आके आई फिगर्ड आउट कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनमें बस एलिमिनेट करना होता है, सारे एग्जॉस्ट करने होते हैं ऑप्शंस, एंड देन ये नंबर का सेट आता है, ओके दोज आई नो आई कैन डू वेल बिकॉज माय मेंटल मैथ्स इज फास्ट, सो आई प्रायोरिटाइज दोज सेट्स व्हेन आई सी देम। VRC में I tried like 5 to 7 different strategies over like 3 weeks of like, should I just do the passages first and then the single questions, or should I mix it up? And yeah, then I just figured out what works for me. So I just practiced my strategy, figured it out by the last week, and that was fine. How many mocks did you give, if I may ask? So I studied only 3 weeks, I am ashamed to admit, but I had all 3 weeks. I was not working at the time. I stopped chess for the time, and 3 weeks I did, for the first 2 weeks, I did almost 2 mocks a day with analysis, and for the last week, just 1 mock a day.
So almost like 40 mocks, or like 30 plus. बहुत बढ़िया। That's all I did. I just did mocks. 40 मॉक देके तो स्ट्रेटजी यार तुम मतलब अलग लेवल बना लोगे। व्हाट वाज द कैट पर्सनल इफ यू मे शेयर? Yeah, 99.7. ऑसम ऑसम। ये भाई चेस प्लेयर है, इनका दिमाग अलग लेवल है। तो ये सोच के ये मत बोलना कि भाई हम लास्ट 3 हफ्ते ही पढ़ेंगे क्योंकि तोशान ने कर लिया था। ग्रेट तोशान, थैंक यू सो मच।